કેમ્પસ કનેક્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે અમે છીએ ટ્યુલિપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં, જ્યાં ખૂબ જ મજા આવશે. કેવા છે અહીંયાના બાળકો, કેવા છે અહીંયાના સ્ટુડન્ટ્સ, લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ અને લેટ્સ એન્જોય. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ્પસ કનેક્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું નસરીન અને અમે હાલ છીએ ટ્યુલિપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં અને જ્યાંના બચ્ચાઓ, જ્યાંના બાળકો મારી સાથે છે, એમની સાથે વાત કરીશું. हाय, दिस इज नसरीन અને કેમ્પસ કનેક્ટમાં यू आर वेलकम. अच्छा, आपकी स्कूल आज दिखाएंगे मुझे? जी बिल्कुल. आपको कौन सा डिपार्टमेंट आपकी स्कूल का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? बास्केटबॉल कोर्ट. दिस कोर्ट, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. यस. और आप स्पोर्ट्स कैप्टन है? यस यस. ओके, कैप्टनशिप अच्छे से करते हैं ये? यस आई डू. थोड़ा सा. हाँ करते हैं, अच्छे से करता हूँ. ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे इस शो की. एंड यू ऑल पीपल आर गोइंग टू टेक मी टू योर स्कूल विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट? जो बास्केटबॉल कोर्ट तो अभी तक है ही यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे खेला भी बास्केटबॉल. अब शुरुआत करते हैं कैंपस कनेक्ट की. ચલિએ શરૂઆત કરते हैं કન્વર્સેશન की. કેમ્પસ કનેક્ટની શરૂઆત કરીશું અને સૌપ્રથમ હેડ ગર્લને પકડીશ. તો શી ઇઝ હેડ ગર્લ, રાઈટ? વોટ્સ યોર નેમ? ऋषिका. ब्यूटीफुल नेम. ऋषिका, नाउ आई लाइक टू आस्क यू कि अभी जो पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग अगर आप सीएम या पीएम होती, आप मेयर हो अगर, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एज अ जनरल सिविलियन, अगर सिविलियन तो हैं हम लोग, what will you do? Actually, the basic thing is we'll try to plant more trees in every area. The deterioration of trees that has been happening every minute in the country, we would like to decrease that. Pollution, as you said, हम जितना हो सके ट्राई करेंगे. हमारे गार्बेज को हम जितना हो सके डस्टबिन्स में डालें, बाहर सड़क पे ना फेंकें. एज यू गो आउट यू विल सी कि बाहर हर जगह डस्टबिन्स होने के बावजूद भी बाहर कचरा पड़ा होता है हर जगह. तो ये हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज़ डस्टबिन में डालें. एवरी डस्टबिन शुड बी डिफरेंट फॉर. Yes, but there is a major issue, a serious issue in our country. Even we can say globally it is a serious issue, plastic, right? How many of you are strictly not using plastic until and unless you don't need it badly? In your house, in your house or in your daily life, your routine life. Yeah. You always have a substitute for plastic, right? You can always have a cloth bag or a paper bag. So it's not really necessary to use plastic. So you reduce it, you're saving the world. Okay. Of course, we and each of us are responsible for this global warming and we have to take it very seriously. Now I'd like to ask you, social media आप सब use करते होंगे Facebook and WhatsApp, of course. Insta now तो Instagram, yes. तो Facebook और WhatsApp जितना बढ़ रहा है, खास तौर पे टीनेजर्स का, like you, the age group of yours, do you think it's a serious issue now? We should not use it. We should not use it. We should use it in a very specified time. Like if we fix a time in our daily routine to use that, like children are now getting addiction of it. So if parents are thinking that our children should stay away from it, it's not also right. Like messages are come, the daily routine, the daily purposes which are going around us, we come to know through social media. So we should use it in a limited purpose so that we don't get addicted to it. Or the We should not get addicted to it. Yes. How many of you? Yes. How many of you are addicted? You are having addiction of that? होगा तब भी तुम तो बोलोगे नहीं ना अभी कैमरा के सामने.
our social media helps us to connect better. How it connects it? Our generation is that we know too much. For example, we'll see 16-year-olds writing poetry on marital rape, which I don't think was possible in our parents' generation some decades ago. So it has made us more aware, and it has become a medium wherein we are also knowing a bit too much, where a bit of our innocence is lost. But at the same time, it helps us to connect to all the arenas of the world within just one click. So I believe that social media is also a good way of getting updated with the current affairs. Urbanization, yes. Actually, it has both demerits and merits. So that's why we have to use it in a proper way, like we don't get addicted to it. Depends upon the user. If the user is using it in a proper way, it is a good thing. If he's using it in spreading news and all, fake news and all, it is not a good thing. Yes. It's a fake news are there, and there are so many. It's a larger medium of the current affairs that you can get on it. Now, yes. Even social media also helps to communicate between people. So many disadvantages also. But speaking of the disadvantages, it only happens when the person becomes addicted to it or use it in a wrong manner. And without addiction, there is no disadvantage of that? There are disadvantages. There are many disadvantages. Yes. How many? Like someone from other place whom we don't know, he can, in the sense, stalk us like that in a bad way, I can say. There are many disadvantages, like nowadays many fake videos are also coming and many people believe on that videos. You get manipulated, is it? You get manipulated through social media. You can get, there are chances, is it? Depends. It depends on what you're viewing and what your usage depends on. Like if you're just using social media for a few limited amount of time, it wouldn't really harm you. But if you're using social media for different ways by really affecting people, it might affect you in a very obligated way, and this is not really good for you as well as the people you're following and are followed by you. So many countries are there. Yeah. The government needs to play an active role in the social media. As far as we know, only the Instagram or Snapchat or Facebook, the companies itself have control over the post or any text or anything that is on the website or the app. See, the government needs to play an active role so that there are many rumors, there are many pages that put irrelevant information and false information. So that needs to be regulated. So if that is regulated, social media's role in one's life can be improved to a great extent. Besides, we never know what might become viral. From Priya Prakash to Deepak Kalal, their lives have changed overnight because of social media itself. You can be a celeb, overnight celebrity. Okay, yes, of course, yes. Now, have you seen 3 Idiots? Kin ne nahi dekhi? Kaun nathi joi? Raise the hand. Oh my God! Not a single person is there. सबने देखी है? अच्छा, किसने एक से ज़्यादा बार देखी है? Why 3 Idiots? Why? It's really an amazing movie. One should watch it. What you like the most in that? It's an inspirational movie. Main motive of that movie is to spread awareness among the teenagers and everybody. That movie is technically just telling us that only studying or learning something won't teach you. You need to go and practice the studies which you do, and not just in the books, in real life too. It has crispy humor, and on top of that, what I have learned is that I don't like to study, I like to learn. And whichever field I am interested in, if I work upon that, I can achieve marvels and I can be a high flyer. In a country like ours, where parents force us into taking science fields and mathematics and biology, I myself am a math student. I just realized 2 months ago that I'm not really interested in becoming an engineer and I'd like to pursue designing. That's what the message the movie is giving us, that pursue your dreams. It's not really necessary to be a part of the common folk. You can do wonders doing what you do. You like designing? You are Farhan of 3 Idiots, eh? Ma'am, it actually delivers a message that no matter how much people influence you, you must always go on with your heart, what you want, because
only then you can be successful. Like उसमें एक dialogue था कि हम उसमें like it's like प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से कर रहे हैं, उसमें यही डायलॉग था. Actually, it's just like that. Like my parents personally, they were like नहीं अच्छे ग्रेड्स आए तो साइंस ही लेना है, उससे थोड़े आए तो कॉमर्स ही लेना है, उससे नीचे आए तो आर्ट्स ही लेना है. But I said them no, whatever what I want to do, I'll do that. Why should I listen to any of the people or any of the community when it's gonna be my life and it's gonna be my decision? I'm gonna be suffering if I don't follow my heart or if I don't pursue what I like. The same happens with humanities students. That subject is neglected by everyone in this era. Yes, of course. So the thing is, lesson ये है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो बनना चाहते हैं वो बने, जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है. Okay, how many of you have watched Hichki? Not done यार. टीचर के लिए कुछ मोटिवेशनल हो तो वो आप देखते नहीं हो, हैं? हिचकी किसने देखे? फिर से एक बार. What's her name? हर्षवर्धन. क्या अच्छा लगा उसमें? उसमें अच्छा लगा कि हर टीचर की अलग अलग मेथड होती है पढ़ाने की. उनको प्रॉब्लम थी तो भी वो अपनी वो डरना नहीं चाहते थे. शी वांट टू फेस द वर्ल्ड कि नो आई कैन. Yes. उसको कुछ प्रॉब्लम होती है बायोलॉजिकल व्हाटएवर बॉडी में, हिचकी की, हिकअप्स की, एंड स्टिल ही हैड बीन अ गुड प्रिंसिपल और गुड टीचर. अच्छा, उसमें एक डायलॉग है, शायद किसी को याद होगा, देयर इज नेवर अ बैड स्टूडेंट, देयर इज There is never a bad student, there is always a bad teacher. Yes. What you get it from this dialogue? That the students are never wrong. Maybe the teaching method is wrong, or else the student is having a different learning method, because every student has to attain something in his life. Yes. So we should not let him down, and we should find that what should be the method to raise him up. अच्छा, अगर आपको एक चांस दिया जाए कि बॉलीवुड की कोई मेल सेलेब, मेल एक्टर, मेल ऑफ कोर्स एक्टर, ओके, नाउ पद्मावत देखी है सब. उसमें बस दो लोगों ने, જોઈ છે તમે બધાએ જોઈ છે. ઓકે, શું ગમ્યું એમાં? It was कुछ अच्छा नहीं था. फीलिंग लेके बोलूं तो जाने दो. It was not that well because it didn't have a good story. It didn't have a good story, I think. So just because of the scam, it got famous. Yes, of course. That is why I'm asking कि उसमें कंट्रोवर्सी हो गई, बैन हो गया, मूवी रिलीज नहीं हुई. I want to say कि वो उस घूमर वाले डांस में जस्ट उसका थोड़ा सा स्टमक दिख रहा था, बट सी द काइंड ऑफ उसके वजह से they literally had to edit the whole song, and they don't see how like people wear clothes and how kind like साड़ी पहने तो कुछ नहीं, एंड क्रॉप टॉप्स पहने तो पीपल को लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. सो लाइक व्हाई नॉट लाइक अपनी नज़र को क्यों नहीं बदलते लोग? वाइट उस टाइम पे पद्मावत वो पहनती नहीं थी ना क्रॉप टॉप. आपको अच्छी लगी? The movie was good in a way कि हम ऐसे एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारे जो रियल इश्यूज हैं वो कभी बाहर नहीं आते. मोदी जी अभी इतना कर रहे हैं, हर चीज़ में लाइफ इंश्योरेंस सब मिल रहा है, लेकिन जैसे कि राहुल जी अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेके बैठे, वैसे पब्लिक जब हमारे रियल इश्यूज है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, रेप, देन देयर आर सो मेनी इश्यूज जहाँ पे रिजर्वेशन को लेके प्रॉब्लम्स होते हैं, ये कभी लाइमलाइट में नहीं आते हैं. जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो लाइमलाइट में नहीं आती है, और हमारी जो मीडिया है वो सिर्फ ऐसे कंट्रोवर्सीज के पीछे बैठ जाती है जिनसे बस थोड़ी ऐसे सेलेब के बीच में गॉसिप होती रहे और उनको टीआरपी मिलती रहे. अच्छा, बिकॉज इट वॉज बैंड, लोगों ने उसको ज्यादा देखने के लिए क्यूरियोसिटी बताई, लोग ज्यादा क्यूरियस हो गए. The cinematography and the way it was filmed, it was nice. How was Khilji? The Khilji was portrayed as a person who has done wrong deeds, but if you look into the biography, he's not been like that. He has not been like that. Good things for the public. He has done good things, but I think it was hidden in the movie. It was not reflected, it was not revealed in the movie, right? Okay, no problem. He was saying about Modi. Who is going to support Modi?
बिगेस्ट फैन कौन है रे? अच्छा, क्या अच्छा लगता है? मैम वो उस पे कभी भी कोई करप्शन का कुछ भी आरोप नहीं है और वो हमेशा देश के लिए सोचते रहते हैं। और मैम वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इंडिया को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन पॉलिसी वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इसलिए। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझते हैं वो। क्या कहा आपने? और करप्शन का कोई आरोप मोदी जी पे नहीं। ही इज क्लीन कॉलर्ड, व्हाइट कॉलर्ड इमेज ही इज हैविंग। यू वांट टू से दैट? Is it? Yes. राहुल गांधी जी ने किया उतनी करप्शन मीम कंटेंट दिया, एंड मोदी जी ने इसको थोड़ा सिंपल सटल रखा है, तो लोग उन्होंने जो काम किया वो सारे हाईलाइट कर देते हैं उनके करप्शन एंड ऑल सबको। एडवर्टीजमेंट में ज्यादा खर्चा कर रखा है हाँ, लेकिन फिर भी पर जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि हमारा मिडिल क्लास है, अभी आप बताइए 12 रुपए पर महीने में अगर 2.5 लाख का एक आदमी अगर इंश्योरेंस लेके अपने बेटे या बेटी या जो भी उनके रिलेटिव की अगर जान बचा सकता है, तो उसमें क्या है? मैं गांव घूमा हूँ, आई ट्रैवल्ड अ लॉट अक्रॉस गुजरात, जहाँ पे मैं बहुत सालों पहले पानी नहीं आता था, हैंडपम्प लोगों के सलाइन वाटर आता था, नर्मदा से हर जगह केनाल पहुँची है। लोग बड़ी बातें जो बस गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है उन चीज़ों को ही देखते हैं, जो छोटी बातें जो एक्चुअली मैटर करती है। गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, इतना कुछ जो दिया हुआ है उन्होंने, इन्हें अप्रिशिएट ना करने में लोगों की भी गलती है। ओके, तो मोदी जी पर कहीं कुछ कहना है आपको? Yes, every glitter is not the gold. Actually, he has made it out of picture like he is very good and that. So every person, he is not at the perfect at all the stages. He need to be means और भी उनको कुछ करने की जरूरत है. He need to be polish himself. Yes, ma'am. Okay, उनको orator क्योंकि उन्होंने मतलब अपने ओरेशन फैसिलिटी मतलब डिक्टेटर बिकॉज क्योंकि नहीं उन्होंने इस क्वालिटी से हमारे बहुत फॉरेन टाइज बहुत ही अच्छे किए हैं विद अदर कंट्रीज, सो इन दैट वे आल्सो इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। आपको लगता है फॉरेन टाइज जो भी किए उससे कुछ फायदा हुआ? बुलेट ट्रेन तो कब से पड़ा है। अच्छा, वही है। देखो ईस्टर्न साइड में एक ट्रेन जाती है जो मोस्टली 48 आवर लेट होती है, 2-2 दिन लेट होती है, तो उसको इम्प्रूव करने की जगह अगर आप बुलेट ट्रेन ले आओ तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुंबई से अहमदाबाद तो ऐसे 6 घंटे में पहुंच जाते हैं दुरंतो एक्सप्रेस से, रात को निकलो सुबह पहुंचे, तो ऐसे नया ट्रेन लाने की ज़रूरत क्या है? 2 घंटे में जाओ या 6 घंटे में? यस। जहाँ पे कच्छ बॉर्डर्स पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स आते थे हमारे कंट्री में थ्रू पाकिस्तान, वहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उनकी वजह से इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ डाली गई है, वहाँ पे हैबिलिटेशन है, वहाँ पे अब लोग रहते हैं, वहाँ पे लोगों का आने जाने की वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन था वो बहुत हद तक कम हो गया है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट प्लस पॉइंट कि हम अगर अपने कंट्री को सिक्योर कर सकते हैं बॉर्डर्स पे इस तरह से, देन व्हाई नॉट डू इट? ऑफ कोर्स। नाउ मैम ऐसे तो बोलते हैं कि इन्वेंशंस लाओ, अगर हम इन्वेंशंस बड़े स्केल में लाए और वो फेल हो जाए तो उनका क्या? तो पहले छोटे स्केल में करें ना, फिर जाके बड़े स्केल में करें इन्वेंशंस हम। बिकॉज बुलेट ट्रेन का कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कोई पिक्चर क्लियर नहीं है बुलेट ट्रेन का। एंड मैम इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है मैम। ऑफ कोर्स। तो अब हम और भी बातें करेंगे। आप लोग मुझे लैब में ले चलेंगे, आपकी साइंस लैब में, ठीक है? तो जय शू अहिनी साइंस लैब में। कौन मुझे सिखाएगा यार केमिस्ट्री को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस? Acid gives H plus ion and base gives OH minus. So basic question. What how acid affects on the litmus paper and how base? Acid turns blue litmus paper red and base turns red litmus paper blue. Why? Because of its pH value. Yes, of course. And do you know now there is water available with the higher pH, that is potentials of hydrogen? Yes. How it affects in the body, do you know? Ma'am, that actually I don't know about that. What is alkaline properties of the water? Alkaline means it is basic in medium. It is in duodenum and helps in emulsification of fats and digestion of proteins and lipids. How to change the alkaline properties of the water? How to change? What should we do?
by adding acidic medium in it, and by neutralizing it, by making a pH 7, we can pH Less than 7, so it will behave as a acidic, like and in it our will. body we take ENO to make that medium neutral. In our body we use it like ENO neutralizes the medium in the body. like you know it neutralizes the medium. તો આ કેમિસ્ટ્રીની લેબ છે, અહીંયા એસિડ બેઝ સિવાય બીજું તો મને કંઈ આવડતું નથી, અને ધીસ ઇઝ હુક્કા ટાઈપ ઓફ અ થિંગ, દેખાય છે બિલકુલ એક્ઝેક્ટ હુક્કા. આઈ વિલ આસ્ક ધીસ વોટ એક્ઝેક્ટલી ધીસ ઇઝ. સાયન્સ સ્ટુડન્ટ को बुलाऊंगी. You are from science? This is Gibbs apparatus. It is used for production of H2S. From iron sulfide to produce H2S. Gas. Okay. Gas. Okay. How it produces? You like how you insert from this? Huh? Extracted from here gas. Okay. Great. Tongue twister हम खेलेंगे. A good cook good. A good cook good. Good cook good. A good cook 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 cook good. A good cook. A good cook Cook. A good cook cook good. A good cook. कुकड़े कुक हो रहा है. Yes. No. अच्छा. Any other tongue twister? चंदू के चाचा. Betty bought a butter, but the butter was bitter. So Betty bought a better to make the bitter butter better. A good cook good. A good cook good. A good cook cook good. A good cook good. A good cook cook good. A good cook cook. A good cook good. अच्छा भाई ये तुम तो आ ही जाओ इधर है हर्षवर्धन, तुमको तो ज्यादा अच्छे से बोलना है. Yes. A good cook good. A good cook good. A good cook good. अच्छा any other. Betty bought a butter, but the butter was bitter, so Betty bought another butter to make the bitter butter better. Why this Betty bought butter always? ये बहुत simple है. It's easy. Even I can speak so many times continuously. It's easy. It's easy. So tongue twister should not be easy. Yeah. Okay, चलिए अब हम लोग जोर से जय हिंद की तरह कैंपस कनेक्ट, बिकॉज हमारे शो का नाम क्या है? कैंपस कनेक्ट. जोर से लाउडली शाउट करके बोलना है कैंपस. તો કેમ્પસ કનેક્ટમાં ટ્યુલિપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં મને તો ખૂબ જ મજા આવીને આવી જ રીતે નેક્સ્ટ કેમ્પસ કયું હશે અમે જલ્દી જ આપને બતાવીશું. ટિલ ધેન બાય ટેક કેર.